तो HRMS का जो सिस्टम आपने अडॉप्ट किया, ऑफ कोर्स यू अडॉप्टेड द टाइम ट्रैक सिस्टम, मार्केट में बहुत सारे जबरदस्त किस्म के टूल्स भी मौजूद हैं, प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद है। इसके अलावा इंटरनेशनल अगर हम सिस्टम्स की बात करें, वो बड़े जबरदस्त किस्म के, तगड़े किस्म के सिस्टम मौजूद हैं। वाई टाइम ट्रैक सर, वाई टाइम ट्रैक्स? देखिए, इसमें यह है कि अगर मैं आपको इस बात को इस मिसाल से समझाऊं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो कंटेनर पोर्ट की इंडस्ट्री है, इसकी एक अपनी ज़रूरत है, एक अपनी यूनिक इसकी रिक्वायरमेंट, जो कि हो सकता है किसी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड से मीट ना करती हो। उसकी 70% चीज़ें उससे मिलती हों, लेकिन उसकी 30% चीज़ें ऐसी हों जो बिल्कुल ही यूनिक हो, जो किसी इंडस्ट्री में मौजूद ना हो। तो अगर मिसाल मैं आपको इस तरह दूं कि आप किसी दुकान पे जाते हैं कोई लिबास खरीदने के लिए, और उसमें आपको 2 लिबास आप देखते हैं और 100 उसके अंदर थे, आपके 2 लिबास पे नज़र पड़ती है, आप कहते हैं यार ये 2 जो है ना, ये मेरी जो ज़रूरत है, जो मेरा मिजाज है, उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक हैं, लेकिन ये दोनों अगर जम होकर एक हो जाएं तो मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। हाँ, फॉर एग्जाम्पल वो एक ग्रीन है, एक रेड कलर का लिबास है, तो मतलब 2 मल्टी कलर हो जाएंगे। और जबरदस्त वो सिस्टम भी जब आप कोई अडॉप्ट करते हैं तो सब सिस्टम कुछ नहीं होता, असल चीज़ ये होती है आपकी अपनी ज़रूरत क्या है, वो बेसिक है, उसके हिसाब से आप सिस्टम का इंतखाब करते हैं। तो जब हमने अपनी ज़रूरत को देखा तो हमने ये देखा कि हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा हमारी कुछ अपनी ऐसी ज़रूरियात हैं जो कंटेनर पोर्ट या इक्विपमेंट ऑपरेटर्स जो लोग ट्रेन चलाते हैं उससे बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। तो हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो ग्लोबल इन नेचर तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हो, लेकिन वो कस्टमाइज भी हो सकती हो और उसमें कस्टमाइजेशन का रूम हो। तो उसमें हमें ये लगा कि ऑल ग्लोबल सिस्टम्स they are not very forthcoming in terms of customization, and even if you go for customization, the time and cost is very high as compared to the return. But any local system which is reliable and they can offer customization both financially and time wise, it is far more effective to go for a global system. That what we thought. That's why we opted for a local system, time tracks, and we are happy to make that. इसका मतलब है कि आप भी उन्हीं लोगों में से हैं कि why not made in पाकिस्तान? क्या आप भी इसी चीज का तस्वर रखते हैं कि अगर पाकिस्तान में एक बेहतर प्रोडक्ट अवेलेबल है जो कंपैटिटिव भी है, तो why not made in पाकिस्तान? तो आप भी इसी के, मैं इस और आपके दिमाग में इस चीज का कायल हूँ, लेकिन उस सूरत में कि अगर जो प्रोडक्ट आप इंतखाब कर रहे हैं वो प्रोडक्ट जो है वो दूसरी प्रोडक्ट को compete कर सकती हो, तो why not you go for a product which is local? तो इसका मतलब है think global, act local. Amazing. हम तो खैर टाइम ट्रैक्स में काफ़ी मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि एंड टू एंड जो HR का सर्विस डिलीवरी के पॉइंट्स हैं उसमें जितने मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो हम ऑटोमेट कर सकें टू एन एक्सटेंट पॉसिबल। तो हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप एंड बजटिंग भी यूज़ कर रहे हैं, हम रिक्रूटमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, हम पेरोल भी यूज़ कर रहे हैं, लीव एंड अटेंडेंस मैनेजमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग भी यूज़ कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर रहे हैं, और हमारी जो इन हाउस मेस है जहाँ पे लोग खाना खाते हैं उसका भी एक मॉड्यूल हमने बनाया, कैंटीन, वो भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो कोई मॉड्यूल है नहीं, तो हम ऑलमोस्ट एंड टू एंड हम HRMS के जितनी जो HR के सब फंक्शंस होते हैं ऑलमोस्ट सभी फंक्शन से रिलेटेड मॉड्यूल्स हमने टाइम ट्रैक्स के लिए हैं। तो क्या 3 ऐसे की फीचर्स हैं जो आपको लगता है कि यार कस्टमाइजेशन, इंटीग्रेशन के अलावा ऐसे ये फीचर्स हैं जो मैं समझता हूँ शायद इंटरनेशनल प्रोडक्ट भी आता है या अदर कंपैटिटिव प्रोडक्ट्स भी आते, तो मुझे ऐसे लगता है ये इनकी USP है, वो क्या है? ऐसी रैंडमली आप बताना चाहें, बता सकते? इसमें एक चीज़ तो ये है कि वैसे तो ये जितने मॉड्यूल्स हैं दे आर ऑल अवेलेबल ग्लोबली, राइट, एंड प्रॉब्ली इफ यू इवैल्यूएट टाइम ट्रैक्स विद ग्लोबल सिस्टम्स, सो बोथ आर कंपेटिटिव, राइट, बट बिकॉज वी हैव workers who are called equipment operators, so we wanted to, in the modules, we wanted to do an equipment operator module which can keep track of different licenses we have for operators and which can evaluate the productivity of operators. Right. So that was something which was to be customized. So this is something which is in there, all these details of operators which help us to evaluate their productivity and give different stats regarding the equipment operators. This is something which we think is a valuable tool in time tracks. Right. And
The other thing is that the employee self-service, which is also a global thing, which is available globally, but I think if we compare the return of value of time tracks, یعنی that ROI is far higher than any global product. If we were to get all these modules and purchase it globally, then maybe it would have cost us 8 to 10 times more what we have purchased time tracks. But having said that, it is not that people may perceive that it's a very cheap product, so quality is not there, but quality is there. The cost we paid, we are getting the return far higher than what we paid. And in the modules I told, I missed out one module which was e-appraisal. We are also using e-appraisal module. Excellent. علی صاحب آپ مجھے بتائیے کہ ٹائم ٹریکس کا جو آپ پیرول مینجمنٹ استعمال کر رہے ہیں وہ استعمال کرنے سے آپ کی جو نمبر آف آورز ہیں یا پھر آپریشنل ایکسلنس ہے وہ کیسے امپرووائز ہوئی ہے ڈیورنگ دا ٹینیور جب سے آپ ان کا سسٹم استعمال کر رہے ہیں؟ جی اس میں تو خیر بہت بہتری آئی ہے، کیونکہ پہلے جب تک ہمارے پاس سسٹم نہیں تھا تو تمام چیزیں مینولی ہوتی تھیں، ورک شیٹس کے اوپر ہوتی تھی، اس کا چیک کرنا کہ وہ کیا فائنینشلی صحیح ہے اور ریکون بنانا پچھلے مہینے کی نسبت، وہ ایک بہت ہی لمبا کام تھا. لیکن آفٹر دی امپلیمنٹیشن آف دس سسٹم obviously the efficiency has improved by multiple times because everything is being generated by the system itself. All reports are automated and reconciliation reports of different types as per your needs are available in the system, which you can quickly review your payroll accuracy within 10 to 15 minutes, that what are the differences and where they are, and you get to know exactly this payroll is correct and you can proceed. Plus it is also giving you cost analysis, staff cost analysis, because you have reports which are customized, built in as per our need, and every month or as and when required we can log in and we can check what our employee cost is from different angles, which also helps us in budgeting plus to make other decisions of employee investment. So this is obviously helping our payroll team to be more efficient and to be more accurate. And the other perspective is the employee perspective, that prior to this launch of time tracks, they were not able to view their details as and when they want. Now they have a mobile app on which they can access anywhere, even beyond Pakistan. If they are outside Pakistan, they can view their details. So employee self-service has improved. Accessibility of information for both employer and employee has improved. So this is the benefit of having a payroll module. آپ کو ای ریکروٹمنٹ سسٹم کیا بینیفٹس دے رہا ہے یا ان کے پاس کون سے اویلیبل فیچرز ہیں جو آپ کی ایفیشنسی کو مزید انکریز کریں؟ دیکھیے جب تک ہم سسٹم استعمال نہیں کر رہے تھے تو ایسی بات ہے ریکروٹمنٹ کی جتنی چیزیں ہیں ٹھیک ہے، ہم پوسٹنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن تمام چیزیں بہت زیادہ مینول اورینٹڈ تھیں، چاہے وہ ایک مین پاور ریکوزیشن ہو، اس کا اپروول ہو، پلس انٹرویو ایویلویشن ہو، ہر چیز کاغذ کے اوپر ہوگی. تو سسٹینیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کوئی یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے. مطلب جب ہم نے اس کو لانچ کیا ای ریکروٹمنٹ کو تو اس کے بعد ہم نے بہت سے پروسیسز جو ہیں وہ آٹومیٹ کر دیے. جیسے پرسنل ریکوزیشن ہے وہ آپ سسٹم میں مین پاور ریکوزیشن ریز کریں گے، سسٹم میں ہی اس کا ورک فلو کے تھرو اپروول ہوگا کہ وہ ریکویسٹ اپروو ہوئی نہیں ہوئی، وہ بجٹ میں تھی نہیں تھی، یا نیو پوزیشن تھی، نیو پوزیشن تھی، جو بھی تھی وہ تمام تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں، اسی میں اپروول ہوتا ہے. اس اپروول کے بعد جو ایڈ پوسٹنگ ہے وہ بھی آپ اسی کے تھرو کر سکتے ہیں. جب وہ ایڈ پوسٹ ہو جاتا ہے تو وہ ایڈ جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں تو وہ لنک موجود ہوتا ہے، اس پہ جا کے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. پھر آپ کے پاس کیونکہ شارٹ لسٹنگ فلٹر ہے تو وہ جو ایک بہت مشکل کام ہے کہ آپ 1000 ریزیومز کو کاغذ میں دیکھ کر ایک اپلیکیشن کو دیکھیں اور اسپیسیفکیشن کی ریکوائرمنٹ اپلائی کریں، وہ آپ چند فلٹرز کے اوپر شارٹ لسٹ کر لیں. پھر اس کے اندر یہ بھی ہم نے ایک فیچر ہے ہمارے پاس کہ جو شارٹ لسٹڈ ریزیومز ہیں وہ ہم ڈپارٹمنٹ کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، اس کے اوپر وہ اپنی شارٹ لسٹنگ کر کے بتا سکتے ہیں. اس میں انٹرویو شیڈیولنگ بھی ہے، پلس اس میں انٹرویو ایویلویشن بھی آپ آن لائن کر سکتے ہیں. جی جی وہ بھی سارا اس کے اندر آن لائن ہو جاتا ہے. تو یہ وہی والی بات ہے کہ اس پروسیس کو ہم نے ایک تو بہت زیادہ سسٹمیٹک کر دیا، اسٹینڈرڈائز کر دیا، اور اس کا ٹائم ہم نے بہت کم کر دیا، اور جو ویسٹ ہے آف پیپر اینڈ ٹائم وہ بھی اس کے اندر کم ہو گیا.